Good evening, everyone, and a big welcome to you to my live session, which is happening after a long time. After a long time, I'm so happy, so glad to come back and connect with you today in this live session. Uh, yes, there were many of my friends, my social media friends, my offline friends. आजकल लाइव नहीं दिखती हो आप. So then I said, थोड़ा तो चेंज होना चाहिए ना जिंदगी में. थोड़ा चेंज तो लगता है. चेंज is the only thing which is constant. And so we changed the pattern, right? So the pattern is now कि once in a month live जाएंगे, right? Once in a month live जाएंगे. And so that's how it is, right? So दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे इस लाइव सेशन में. पीपल हु डोंट नो मी, आई एम डॉक्टर शिल्पा तोतला. आई एम अ पैथोलॉजिस्ट with a experience of 25 years and also into pan India doctors recruitment. So दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ज्यादा अच्छा है कि इट्स नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स, नॉट ओनली फॉर हॉस्पिटल ओनर्स, बट जो भी इसे सुनेगा, आई एम वेरी श्योर आप फिर से आके कमेंट्स में कुछ ना कुछ आके बताने वाले हो मुझे कि हाउ मच इट हेल्प यू. सो दोस्तों, द पॉइंट इज अबाउट फीडबैक. आप लोगों ने पोस्टर देखा है और इज अबाउट फीडबैक. बताइए मुझे दोस्तों, प्लीज टेल मी दैट जब भी किसी को फीडबैक देना है, राइट? जैसे कोई दोस्त है, राइट, कोई कलीग है ऑफिस में, उनको अगर आपको फीडबैक देना है कि ये चीज आपकी थोड़ी गलत होगी, लेट्स से प्रेजेंटेशन हुआ, राइट, कोई प्रेजेंटेशन हुआ और आपको फीडबैक देना है, तो क्या आप इजीली देते हो? क्या आप देते हो इजीली? नो, यू ऑल डोंट गिव इट. व्हाई? बिकॉज आप लोगों को लगता है, और जो होता भी है, राइट, इट्स नॉट ओनली लगता है, ये हुआ है आपके साथ, इसलिए हम फीडबैक नहीं देते. बिकॉज हम जैसे फीडबैक देते हैं, हमारे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, राइट? पीपल बिकम अपसेट, पीपल बिकम डिसअपॉइंटेड, दे फील डीमोटिवेटेड, एंड दे फील यार हम तो सिर्फ गलतियां ही निकालते हैं, राइट? और इस वजह से क्या होता है, हमारे जो रिलेशन है वो स्ट्रेन हो जाते हैं, डिस्टेंस हो जाते हैं. दिस हैज हैपेंड विद यू, देयरफॉर वी डोंट गिव फीडबैक. नाउ हाउ डेंजरस इट इज, राइट? हाउ डेंजरस इट इज कि आपको दिख रहा है कि मतलब कभी कभी इट इज माइल्ड, बट कभी कभी आप बहुत बड़ी चीज से किसी को बचाने वाले थे, बट आपने नहीं बचाया बिकॉज आप डरते हो कि रिलेशन खराब हो जाए. चाहिए भाई, आप करो मिस्टेक करो, पर मेरे रिलेशन तुम्हारे साथ ना खराब हो, राइट? कितना डेंजरस है ये. आप किसी को गलत हुए होते हुए देखते हो, गलती करते हुए देखते हो, पर आप नहीं बताते, राइट? इज सो डेंजरस. एंड दैट्स द वेरी रीजन दोस्तों, आज मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे टेक्निक्स, ट्रिक्स कह सकते हैं, लाए हैं, जिससे आप फीडबैक देने में प्रो हो जाओगे. और आपके इस प्रो होने की वजह से आप आपके नियर एंड डियर वंस को, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, आप उनको कितनी गलतियों से बचा सकते हो. एंड जहां आपको फीडबैक देने के बदले में थैंक्स मिलेगा. हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड? प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. यस, आपको सुनना है ऐसे फीडबैक के टेक्निक्स. यस, जब तक मी ना मिले मैं कहाँ से आगे जाऊँ? कुछ तो फ्यूल लगेगा ना, कुछ तो फ्यूल लगेगा. आखिर 1 महीने बाद आई हूँ. So if you're writing me in the comment box, see, I have people there on Facebook, I have people there on Instagram, LinkedIn, YouTube, सब तरफ है. me लिखिए, राइट? एंड दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, छह छह टेक्निक्स आपको बताऊंगी मैं ऑफ हाउ टू गिव फीडबैक, राइट? So yes, I'm getting quite a few me's, and that is really motivating. Thank you so much. Thank you so much for your response. And those, let us go ahead with our first technique of how to give a very, very constructive feedback, and that is the SBI technique. What is this SBI? What is this SBI? Not State Bank of India. It is situation, behavior, impact. Right? देखिए दोस्तों, जो छठा होगा वो किंग ऑफ फीडबैक से, फीडबैक टेक्निक्स है. छठा, सिक्स वन. स्टे विथ मी टिल द एंड, बिकॉज जो लास्ट है ना,
that is going to be mind blowing, which I use often, right? Yeah, but ये पांच भी बहुत अच्छे हैं. तो फर्स्ट इज एसबीआई सिचुएशन बिहेवियर इम्पैक्ट. अब इसमें क्या होता है कि आप उस सिचुएशन को लेके उस सिचुएशन में उस व्यक्ति के बिहेवियर को एड्रेस करते हुए उसका इम्पैक्ट बता के फीडबैक फीडबैक देते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी को फीडबैक देना है that yesterday when I was watching the patient, I was examining the patient in my cabin, right? Right? Situation. You also gave your suggestion at the same time to the patient, right? Behavior, which confused the patient, right? Which confused the patient, right? And so please don't do this in the future, right? तो ये हो गया सिचुएशन बिहेवियर इम्पैक्ट, राइट. देखिए दोस्तों, फीडबैक देते हो कुछ डूज एंड डोंट्स है, राइट. डोंट्स क्या है? टू डोंट्स. कभी भी जनरलाइज मत करो किसी फीडबैक को. डोंट मेक इट जनरलाइज्ड, राइट. एंड सेकेंड वन इज डोंट कीप इट पर्सनलाइज्ड. इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन मत डालो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ नॉट टू कीप इट जनरलाइज्ड, कि you always come late. Hello, you should say you are coming late since past 3 days, right? You came late in the past month for 10 times. So don't say always, क्योंकि जो 20 दिन में से 20 दिन वो बंदी टाइम पे आई है, उसको तो आपने जीरो कर दिया. एंड द पर्सन इज सेइंग भाई 20 दिन तो मैं टाइम पे आई ना. सो डोंट से ऑलवेज. यही एक रीजन होता है. दैट इज अ वेरी कॉमन reason to trigger people, to trigger people, and to spark them, and to feel them like kya bakwas feedback de rahe ho, what is this, right? So don't keep it generalized, otherwise people are quite open to feedback, right? Number two is don't make it personalized, right? आपको जिससे गुस्सा है, जिसके बारे में आपका जजमेंट, आपका ओपिनियन थोड़ा सा नॉट सो गुड है, उनके लिए आपका फीडबैक थोड़ा हार्श हो जाता है. वही वाला फीडबैक आप दूसरों के को दोगे तो वो अच्छा है. डोंट कीप इट लाइक दैट. वो आपका पर्सनल जो ओपिनियन है, पर्सनल टच, उसको साइड में रख के एक हेल्दी तरीके से फीडबैक. So these are the don'ts for feedback. Don't generalize, don't make it personal, and don't give any personal touch to it. So friends, situation, behavior, impact, right? तो इससे क्या हो रहा है, अपने सिचुएशन को लेके, उस बिहेवियर को लेके आपने इम्पैक्ट बताया है. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यू नो when you poke when you give your opinion to patients in front of others, the patient gets confused. Don't like that. Don't say like that. Yesterday when you did this, this is what when you did this was the impact. So that is SBI, number one. Number two is feel forward. इसका मतलब है कि instead of focusing अभी इसी चीज को कि yesterday you did this, and when I was saying this, you still did this. Then the person will say, no, actually I meant that. Then you say, no, but you said this. तो आप इतना जो डिटेल में जाते हैं, मैं आपने जो आपने बोला उसको ब्लेम गेम लगा, फिर उसने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, फिर एक्सप्लेनेशन को लेके आपने उसको फिर बोला, no, the time was not 10:1, the time was this. You did not say before my line, you said me after the line. इतना डिटेल में, इतना पोस्टमार्टम हम कर देते हैं उस चीज का कि what happens that it really disturbs, right? It really disturbs the context, right? तो feel forward technique में सीधा आप आगे just tell what is the future improvement needed. कि hey, what whenever I see patients, right? If you have any suggestion to be given to the patient, please, message me, or you can go outside and call me, or if it is, you can hold it and you can tell after the patient goes, that will be really great, right? Futuristic. Instead of past के mistakes को आप ये करो, dissection करो, futuristic. So that is also one very important thing. So the third method is ask for self-assessment, right? Ask for self-assessment. This generally works जब कोई प्रेजेंटेशन हो जाता है, राइट? और जैसे अगर मेरा प्रेजेंटेशन भी हो रहा है, तो इफ आई आस्क यू फॉर फीडबैक, आपने कहना मैम आप सेल्फ असेस कीजिए ना, आप सेल्फ असेस कीजिए, आप अपने आप को आज के प्रेजेंटेशन में 10 में से कितना दें.
I would say 10 on 10 तो नहीं, 10 में से 7 दूंगी. Okay, good. Self assessment is the best, right? Because most of the times people know where are they going wrong. At least when you make them think, right, कि कहाँ सही था. और ये जो 10 में से गुण देने वाली बात है ना, इतना जबरदस्त फैबुलस तरीका है, बिकॉज इट बिकम्स सो ऑब्जेक्टिव, राइट. 10 में से 10 कोई नहीं देता. एवरीवन इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, राइट. कोई भी 10 में से 10 नहीं देगा, एंड बिकॉज जस्ट बिकॉज मेरा है मैं 10 में से 10 नहीं दूंगी. तो बोलो भाई, आप अपने आप को सेल्फ असेस कर लो और आप ही देखो कि वहाँ कहाँ आपको लगता है कि इट शुड हैव चेंज, राइट. So self-assessment is a wonderful technique once again, right? And friends, then we come to the fourth one, and that is NVC, the non-violent communication, जिसमें हम पूरी जिम्मेदारी खुद पे लेते हैं, पूरा हम पे खुद पे लेते हैं. जैसे सियारा ना पैथोलॉजी लैब एंड हम रिपोर्ट्स देते हैं, राइट. अगर मेरे टेक्नीशियंस को मुझे एनवीसी टेक्निक से फीडबैक देना है कि लेट्स से कि हमारे यहाँ पे रिपोर्ट्स देने में लेट हो रहा है, वैसे हो तो नहीं रहा है, बट मैंने एग्जांपल दिया, रिपोर्ट्स पेशेंट्स को देने में लेट हो रहा है, तो मैं एनवीसी तरीके से फीडबैक कैसे दूंगी. You know what, when patients get late reports, I feel stressed, right, right. And you know, can we ensure, can we work together and see to it that we give timely reports to the patients so that, you know, they get treated earlier and better, right. So this is the NVC, non-violence. Non-violence में कैसे था, you know, महात्मा गांधी जी का कैसे था, मुन्ना भाई का कैसे था, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. खुद पे ले लो और वहां से बोलो. इसमें तो किसी को बुरा लगने का काम ही नहीं है, मुझे स्ट्रेस होता है, राइट. तो एंड लेट अस वर्क टुगेदर, इसमें है इट इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन, राइट. एंड दोस्तों, देन वी कम टू द last technique, right? We come to the last technique, which is the king of all the techniques, and that is the sandwich technique of feedback, giving feedback, and that is, you know, sandwich your feedback between two positive feedbacks, right? Sandwich between two positive feedback, like वही पेशेंट जो आपके केबिन में बैठा था, आप पेशेंट को एग्जामिन कर रहे थे, और द पर्सन, यू नो, द योर फ्रेंड स्पोक इन बिटवीन, आपने जो सलाह दी है पेशेंट को, उन्होंने और कुछ दी, और पेशेंट गॉट कंफ्यूज, राइट. थोड़ा सा अलग सलाह थी, तो पेशेंट गॉट कंफ्यूज, राइट. इसी एग्जाम्पल को देखेंगे. यू नो व्हाट, कीर्ति, राइट, उस फ्रेंड को कीर्ति बना देते हैं. यू नो व्हाट कीर्ति, you are otherwise a wonderful and a very helping individual, right? You know, you are a very helping individual, and yesterday also you wanted to help the patient by giving your, you know, different perspective or fresh perspective of the disease. However, my recommendation to you is, or my request, word use कीजिए, my request to you is that if you can, you know, if you can hold that feedback, you know, instead of telling the feedback directly to the patient, right, which is confusing the patient, if you could have told me by some means, right, you know, either directly or through a message or going out and calling me and telling, that would have been great and not confuse the patients, right. But overall, your attitude of helping always helps everyone. You are a helping individual, you could have done this feedback, and then you sandwiched once again with something positive, right. माइंड इट, इसमें कहीं भी बटरिंग नहीं करना है, इसमें कहीं भी मैनिपुलेशन नहीं है. मेनी पीपल फील दिस इज मैनिपुलेशन. नो, जेन्युइन पॉजिटिव फीडबैक हमें देना है. कुछ भी ऐसा नहीं, कहीं से खींच तान के कुछ झूठा आर्टिफिशियल हम पॉजिटिव नहीं दे रहे, राइट. तो जेन्युइन पॉजिटिव दो. जैसे पेशेंट्स को रिपोर्ट लेट देने वाली बात है, इसको कैसे बताएंगे? To the technicians. See, overall, whatever work you are doing, that is amazing, right? The quality of reports that we are maintaining, the quality of, you know, execution, that is amazing, right? Great job, you all, by all of you. Only one thing is that, you know, we should give our reports in time. You know, giving late reports is really, you know, disturbing the patients, and we are not doing any justice to them. But overall, you guys are amazing, right? You are doing a great job. Sandwiched between something, two positive, authentic feedbacks, you have sandwiched it. Right? This is called as constructive feedback.
राइट? इसी को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बोलते हैं। कितने लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिवली फीडबैक, अरे क्या, व्हाट इज दैट, राइट? So these all, rather every all of these are constructive feedbacks. But see, sandwich technique works like anything, right? You can tell this to your काम वाली बाई, right? उसके अगर बर्तनों में अगर पाउडर है, राइट? बर्तनों में पाउडर है, तो माशी आप काम बहुत अच्छा करते हो, राइट? आप काम बहुत अच्छा करते हो, टाइम पे आते हो, व्हाटएवर इज पॉजिटिव अबाउट, आप टाइम पे आते हो, रेगुलर हो और फास्ट काम करते हो, अमेजिंग। सिर्फ एक ही है ना, इतना ध्यान रखना प्लीज कि बर्तनों में पाउडर बहुत रहती है, राइट? उतना ध्यान रखिए, अदरवाइज आपके काम जैसा तो कुछ काम ही नहीं। अरे इवन द काम वाली mom, she has got a great ego. Her ego will not be disturbed and she will take it in a positive manner, right? So please, understand these techniques of feedback. It's just a technique. Everything, I believe that everything is always a technique, right? It's, only thing that is stopping us is our awareness about knowing the techniques, right? हम लोग aware नहीं है, इसलिए technique नहीं use कर रहे हैं. So that's it, friend. And so let me revise it for you, all these, actually, sorry, 5 techniques, they're not 6. First technique was SBI, the situation behavior impact technique. Second technique was the feel forward technique, जिसमें आप futuristic ही बता रहे हो, फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स की बात कर रहे हो, पास्ट को बहुत डिग नहीं कर रहे हो। थर्ड इज सेल्फ असेसमेंट, बोलो आप बताओ 10 में से आप खुद को कितना दोगे, राइट? देन फोर्थ इज एनवीसी, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, जिसमें आप खुद पे लेते हो कि आई फील स्ट्रेस, लेट अस वर्क टुगेदर एंड हैंडल दिस प्रॉपर्ली। एंड द लास्ट एंड द king of feedback giving techniques is sandwich technique, where you sandwich your feedback recommendation between the positive recommendations, positive feedbacks, right? And हमने don'ts देखे हैं। Don'ts में don't generalize and don't be very specific, and don't add your personal touches to it. Some do's would be कि हमेशा ही फीडबैक मतलब ये नहीं है कि कहाँ गलत हो रहा है, पॉजिटिव भी फीडबैक दिया करो। यार द वे यू प्रेजेंट इज अमेजिंग, यू कम लाइव, वी लाइक इट, द वे यू स्पीक, योर एनर्जी इज ग्रेट, योर टॉपिक्स आर ग्रेट। पॉजिटिव भी तो है कुछ बोलने जैसा, लोगों में पॉजिटिव भी फीडबैक दो, फिर आपके नेगेटिव फीडबैक बहुत डाइल्यूट हो जाएंगे, राइट? नेगेटिव मतलब, सॉरी, आई शुड नॉट यूज द वर्ड, आई शुड से पॉइंट्स टू इम्प्रूव। नेवर यूज द वर्ड नेगेटिव, पॉइंट टू इम्प्रूव, राइट? तो पॉइंट टू इम्प्रूव आपका तभी सुना जाएगा जब आप पॉजिटिवली देते हो, राइट? ओवरऑल तो सैंडविच तो ऐसे ही आपके बन जाएंगे अपने आप, स्पेशली बनाने नहीं पड़ेंगे। सो दैट इज गिव पॉजिटिव फीडबैक। ऑल्सो सेकेंड इज गिव टाइमली फीडबैक। पेशेंट्स को रिपोर्ट आज लेट जा रहे हैं और आप मंथली मीटिंग की राह देख रहे हैं, मैं मंथली मीटिंग में बताऊंगी, इट वोंट वर्क, राइट? कोई पेशेंट नाराज होके गया है और वो बोल रहा है आपके यहाँ से लेट रिपोर्ट आ रहे हैं, डोंट वेट फॉर द मंथली मीटिंग, राइट? Give the feedback timely then and there, right? So these two are very, very important things about feedback. आशा करती हूँ ये सारे ही 5 टेक्निक्स आप लोगों को हेल्प करेंगे, एंड यू विल बिकम किंग्स एंड क्वींस ऑफ गिविंग फीडबैक, एंड यू विल हेल्प योर नियर एंड डियर वंस, फ्रॉम अवॉइडिंग देयर मिस्टेक्स इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आप सभी के सीखने के जज्बे को सलाम करते हुए मैं डॉक्टर शिल्पा तोतला आप सभी से विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ फिर से एक बार मिलेंगे अगले महीने किसी एक दिन, जिसके बारे में हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। विश यू अ हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू सो मच।